At the same time, in the 2 years, we have incorporated a company in UK, USA, and Canada. So it was good learning experience, and we got the growth as well. So, sir, before we go on to the main topic, what are your thoughts on competitive exams like UPSC, CA, and other such exams? I mean, I have been to one exam, as you people mentioned, that UPSC. It was a whole learning experience for me. Uh, it's a process. Life is, it's all about the process. You learn in between these things and you implement further. मतलब आप एक बार learn करते हो उस चीज में, फिर आप वही चीजें अप्लाई करते हो, राइट? तो मैंने अपने जीवन में ना जो सबसे ज्यादा सीखा है ना, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन सीखा. दैट आई इम्प्लीमेंटेड इन माय बिजनेस ऑल्सो. कि आपको आपको बिजनेस एथिक्स हमेशा ध्यान रख के चलना है, आपको लोगों की हेल्प करना है. सो द बेसिक पिलर्स केम फ्रॉम द लर्निंग विच आई लर्न इन माई करियर के. जैसे यूपीएससी की तैयारी में, सीए की तैयारी में, मैं सब फेल होता गया. यूपीएससी फेल हुआ, सीए फेल हुआ, कैट फेल हुआ. लेकिन आई लर्न थोड़ी. आप सारी चीजें तो नहीं आप फेल हो सकता. कुछ चीज तो आपको चिपकती है ना, कुछ चीजें तो याद रहती है ना. तो दैट लर्निंग विच आई इनहेरिटेड एंड आई एग्जीक्यूटेड इन माई बिजनेस. So I would say my last comment would be कि कोई सी भी एग्जाम है तो इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. गो फॉर इट. अगर होता है तो वेल एंड गुड, आपने जो चाहा वो हो गया. अगर नहीं हुआ तो इट्स नॉट एन एंड. पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त. Definitely, sir. I agree. Every journey has a learning experience, and as you have also mentioned in some of your interview that you are a student of ground reality, and I think वो जो चीजें जो सीखने को मिलती हैं, वो experience gain करके वही life में बहुत ज़्यादा important होता है. So, sir, my next question would be कि nowadays youngsters do not want to start do not want to do 9 to 5 job, and being inspired by like you guys, young entrepreneurs, they want to start their own venture. So before starting any venture, what kind of particular mindset should they have? See, mindset ऐसा होना चाहिए कि आप never give up वाला mindset होना चाहिए. That what I think. See, you might start again after failing, but आपको कभी भी यू टर्न मारना पड़ सकता है. देयर इज नो डाउट इन. आप कई बार फेल हो सकते हो, आपको वापस से गाड़ी घुमानी पड़ती है. मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने का गोल है ना, तो आप लोग कौन से सिटी से हैं बाय द वे, इफ आई आस्क यू व्हिच कॉलेज इज दिस? So it is Aryabhatta College, South Campus, University of Delhi. दिल्ली. तो अगर आपको दिल्ली से मान लो आपको सीपी जाना है ना, तो सीपी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे. तो कई रास्ते में ना कई बार रोड बनती रहती है, तो आपको यू टर्न मार के दूसरी रोड पकड़नी पड़ती है. सो दीज आर द मीडियम्स टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल. आपको सीपी जाने के लिए बहुत सारे मीडियम्स है ना, डिफरेंट नंबर्स ऑफ रोड. तो आपको कई बार ना रोड खराब भी मिलती है, जैसे कि अभी मैं किसी रोड में तो खराब है. लेकिन ऊबड़ खाबड़ रोड मिलेगी, कई बार बंद मिलेगी आपको. यू माइट हैव टू टेक द यू टर्न. लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा जो गोल है वो सीपी है. मेरे को वहां पे जाने ही जाना है भाई. आज मेरे को वहां पे जाके फायर पान खाना है, मेरे को वहां पे जाके वो केवेंटिस वाला मिल्क शेक पीना है. तो आपको वो चीज अचीव करनी है, तो आपको तो जाना पड़ेगा. एक माइंड सेट होना चाहिए नेवर गिव अप वाला. तो माइंड सेट आपके पास हमेशा होना चाहिए. एक माइंड सेट, दूसरा जिगरा, करेज आपके पास में जरूर होना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ. Yes, sir. Definitely. Never giving up is a virtue that's really needed if you want to reach your goal. So now let's say that an entrepreneur person has a mindset and he has an idea. How does he evaluate whether his idea has potential? And he can make a realistic judgment about it instead of being biased because it's his idea. Yes. The main problem is why most of the startup, more than 90% of the startup fail, because they are very much fascinated by their ideas. I always say that. वो हमेशा ना बहुत ज्यादा किसी को अपने लगाव हो जाता है अपने आइडिया से. लेकिन वो चीज नॉर्मल होती है, लेकिन आपको उसका प्रैक्टिकल असेसमेंट करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू हैव टू कीप द क्रिटिक अलोंग एंड द मेंटर अलोंग. कई बार आप लोग फॉर एग्जांपल आप मुझे लेंगे तो मैं कभी चाय पीता ही नहीं हूँ, और ना ही मुझे कभी चाय अच्छी लगी है. बट आई नो द फैक्ट दैट पीपल लाइक इट. There is a demand. There is a demand of tea, and there is a surge in the demand of the tea which is going in the world. It is the highest consumable beverages on the planet after water. So I know that. So you have to sell what there is in the demand.
जो कि, या फिर आपको जो लगता है वो चीज बिक सकती है, तो आपको एक बार ना अपना जो आपका जो आइडिया ना वो ठोक बजा के चेक करना चाहिए कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट में। कई बार ऐसा रहता है कि हम लोग कुछ भी चीज लेके आ जाते हैं और एकदम फिनिश्ड का भी वेट नहीं करना चाहिए। वन पॉइंट आई वांट टू ऐड कि आपका हर बार ना आइडिया एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। So don't wait for the perfection. Execute with the data whatever you have with the practical mindset. और बाकी सारी जो गलतियां है ना वो रेक्टिफिकेशन आपके कस्टमर फीडबैक से साथ में टाइम टू टाइम होता रहता है। कोई भी प्रोडक्ट एकदम फिनिश होके नहीं आ सकता मार्केट पे। Definitely, sir. अगर अपने मतलब emotional attachment can have a negative impact as well while you're building a business. So, sir, my next question would be about networking. That what is important of networking in building a startup, and what is your personal experience while building your own startup, Chai Sutta Bar? My experience of building a startup. Can you please repeat the questions? Of course, sir. Sir, I'm asking that what is the importance of networking while building a startup? Okay. And your experience. Our networking is very important. In corporate world, we call it networking. In the general layman term, what we have heard from parents and our fellows is व्यवहार, संबंध। तो हम लोग ना we are very much into the this संबंध and relations वाला thing हम लोगों से बहुत ज्यादा बनाते हैं, because it help us a lot। मैं जब चालू किया था तो अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो शायद ये स्टार्टअप इतना बूम ही नहीं होता। आपने सुना होगा कि गर्ल्स हॉस्टल के पास में हम लोगों ने ओपन किया था वाली स्टोरी। सो अगर मैंने अपने दोस्तों को वहां पे नहीं बुला के खड़ा होता, एक डमी भीड़ हमने नहीं बनाई थी, तो हम लोग को शायद एक्सपोजर ही नहीं मिलता प्रोडक्ट का, राइट। लोगों को यही लगता कि यार कैसे मिलता प्रोडक्ट। हम लोग के पास इतना ज्यादा कोई टैक्टिक्स हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन वो बहुत जरूरी था। मेरे पास दोस्त क्यों आए? नॉट जस्ट बिकॉज वी आर सर्विंग देम फ्री टी, बिकॉज मेरे उनसे अच्छे रिश्ते थे। सेकेंडली सेकेंड थिंग अगर मैं आपको बोलूं तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग के यहाँ पे एक आईआईटी और आईएम की एक I5 समिट होती है जहाँ पे लोग बेसिकली पिच करते हैं। सो फर्स्ट टाइम वे पिच्ड, तो हम लोग के पास ना अच्छे वो नहीं थे, डेटा नहीं था, हम सब पीपीटी नहीं बनाती थी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वो हम लोग की पीपीटी हम लोग ने उनसे, जब वो जूनियर्स थे, जब जिनसे हमने अभी अपने रिलेशन बनाए थे, नेटवर्किंग की थी, जब वो सीनियर हो गए, जब I5 समिट हुआ तो उन्होंने खुद ने हमारी पीपीटी बना दी और हमको पिच करने का मौका मिला। सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्रेडिट मिल जाता है उस चीज से। आपको लिंक्डइन में देखो, एवरीथिंग इज डिजिटल। लिंक्डइन में रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं होगी तो आपको रिकमेंडेशन एंडोर्समेंट नहीं मिलेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Definitely, sir. And when we are discussing about networking and marketing, so I believe digital marketing has gained lots of importance in last 2 years. So, sir, like, what do you feel about that digital marketing, building any business, the importance of digital marketing? Again, it is very basic pillar of business nowadays, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी के पॉकेट में पहुंच सकते हो। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिजिटल मार्केट स्पेशलिस्ट इन योर टीम। ईदर यू हायर देम और यू योरसेल्फ बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। And so, if I ask you about any particular platform, digital platform that you follow a lot. Digital platform, I follow everyone who is trending. कोई भी जो भी ट्रेंड करता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ जिनके पास कोई टैग नहीं है। दैट इज जो लोग अभी फेमस नहीं है, प्लस स्टिल उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मैं उन लोगों को जरूर फॉलो करता हूँ। Yes, स्टिल दे sir. आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स। मैं ट्विटर में बहुत उन लोगों को फॉलो करता हूँ। बहुत नीश है जिन्होंने बिल्ड किया, जो अभी प्रोग्रेस में है, जो अभी प्रोसेस में है, उन लोगों को जरूर फॉलो करता हूँ। Yes, sir, definitely. Especially how social media has been evolving over the past years. Digital marketing has gained even more importance, maybe even more than maybe personal marketing. So, sir, all of us know about yours and Anand sir's legendary friendship. And similarly, a lot of startups today are the same thing. A group of friends come together and start up a company. But it has been seen that once the venture starts becoming profitable, there's sometimes a lot of friction between these friends, either due to money or power in the company or any other reason. So, how do you suggest young entrepreneurs prevent such problems from occurring in the future? Well,
See, before starting something, you must focus on very important that your vibe must match. तो मुझे लगता है ना कि आपकी वाइब जरूर मैच करनी चाहिए जब भी आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज। मेरे को फाउंडर के साथ में मेरी वाइब बहुत ज्यादा मैच करती है। एक तो वाइब, सेकेंडली आपका मोटिव जो होता है ना, आपका विजन होता है, दोनों का मैच करना चाहिए। मैं इसको इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझाता हूँ कि हम लोग कैसे ना कि ये हमारा बेबी है, ये स्टार्टअप ना मेरा बच्चा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ग्रो किया है, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो आप कभी भी याद रखो, माँ बाप के बीच में कभी भी लड़ाई हो जाए ना, बच्चे के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे के ऊपर असर नहीं होना चाहिए, घर पे कितने भी कलेश हो जाए। सो देयर इज द स्पेस फॉर दी मतलब रैशनल डिबेट के लिए, जिससे एक अच्छा आउटकम निकल के आए, विच इज गुड फॉर द बेबी। आप ये नहीं कि झगड़ने लग जाओ। सो आप लोग का अगर मोटिव यही रहेगा दोनों का कि भाई मेरे को कंपनी को बड़ा करना है, मेरे को अपने बच्चे की परवरिश करनी है, बच्चे को बड़ा करना है, तो आपके बीच में कलेश नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके अंदर में ये रहेगा ना कि आपको बड़ा होना है, कंपनी से भी बड़ा, या फिर आपको फोकस करना है खुद के ऊपर, सो वहां पे चीजें बिगड़ जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपना को फाउंडर चूज करें तो आपकी वाइब मैच हो। सेकंड, आपका विजन दोनों का एक समान होना चाहिए। अगर आप उस चीज को अलाइन करके चलोगे, देखो भाई, ग्रीड तो लोगों के अंदर आती है। जहां पे पैसे की बात आती है ना, जहां पे फेम की बात आती है, वहां पे लोगों के अंदर कपट आना स्टार्ट हो जाता है। सो उस चीज को मैच करने के लिए सिर्फ इमोशनल वाइब जो होती है वो मैच करनी चाहिए। वो मैच करेगी ना तो ये चीजें नहीं आती है। हम लोग को यार काम करते रहते 5-6 साल हो गए यार, मतलब इस बिजनेस में। तो मैंने स्क्रैच से चालू किया, आनंद ने पैसे डाले, इतना सब कुछ किया, मैंने 1 रुपया नहीं है, आज कंपनी का फेस मैं हूँ, लेकिन आनंद को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। वो मेरे को पुश करता है कि तू जा, बिकॉज यू स्पीक वेल, है ना। और फिर एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि आज कंपनी मतलब कैसे चालू हुई, करोड़ों की कंपनी है ना, करोड़ों का वैल्यूएशन है। जरा से मेरी देर में कपट आ सकता था? नहीं, कुछ भी नहीं। इट्स नॉट जस्ट वन बिजनेस अबाउट दिस Chai Sutta Bar. We are into the different domains. We are into the real estate also, where things go a different way. ना वहाँ पे थोड़ा सा कैश वैश का चीजें रहती है। Still, we are saying. Sir, so you're starting a young company, let's say, and do you think that using any legal measures like contracts or anything to divide the, set a boundary between the founders at the start shows a lack of trust that could affect them in the future? See, contract and legal document is very important. Sometimes it might happen कि आपके बीच में communication gap हो जाए, आप कुछ चीज भूल जाओ। It is a possibility. It's a possibility. तो आपको क्या करना चाहिए ना, इट्स बेटर कि आप जो भी अपना डायलॉग है ना, आप उसको ना रिटन में रखो ऑन ईमेल्स, एंड देन हैव वर्बल डिस्कशन विद ईच अदर। तो वो चीजें रहेंगी आपके बीच में। सो लीगल कॉन्ट्रैक्ट इज गुड। आपको करना ही पड़ेगा यार, अगर कंपनी में डायरेक्टर हो, आपके कितने कितने की ओनरशिप है, आपको शेयर तो डिवाइड करने ही पड़ेंगे ना भाई, वो तो करना ही पड़ेगा। और या तो आप फर्म बना रहे हो, तो LLP बना रहे हो, तो उसमें भी आपको बताना पड़ेगा कितने परसेंट की पार्टनरशिप है आपकी। तो वो तो आपको होना ही चाहिए, वो तो आगे के लिए अच्छा है कि आप फंडिंग रेज करो आगे चलने के लिए, और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लीगल बेस नहीं है, आपको पैसा कौन देगा? कोई नहीं देगा, बोलो ये तो फर्जी है। तो आपको सारी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। Definitely, sir, I agree. Differentiating your personal as well as professional life is very important while building any business. So, sir, my next question would be on funding. That what challenges will anyone face while trying to get funding for their startup? See, what I faced, मैं अपना बता सकता हूँ, because I tried only once in my life to raise fund. Initially तो आनंद के पास थे, so we managed somehow with 3 lakh rupees. As I said कि मैंने आपको I5 summit वाला बताया कि we tried to pitch there, but unfortunately हम लोग ने PPT दी तो वो नहीं हुआ। Second time when we got the stage, मैंने फाड़ दिया। There is a speech in YouTube, you can just access that speech, and आप देख सकते हैं मेरे को वहीं से नीचे से ही जैसे अभी शार्क टैंक चल रहा है, तो नीचे से इन्वेस्टर्स ने बोल दिया कि वी आर रेडी टू फंड, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिया, अभी तक हम बूटस्ट्रैप है। सो व्हाट आई हैव सीन इन दिस जर्नी, दैट पीपल विल पे यू ओनली व्हेन यू हैव द कैलिबर टू रीपे देम इन द मल्टीपल्स, राइट। आपको 100 रुपए दिए उन्होंने, आपके अंदर ये क्षमता है 500 रुपए देने की, आपके अंदर वो है, तभी आपको पैसा देगा, नहीं तो बेवकूफ नहीं है। एकदम सीधा सा गणित है।
तो वो कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर ये कैलिबर है? वन इज योर एटीट्यूड. कभी भी ना, एक डायलॉग है रेस में, कभी ना पैसा जो है ना घोड़े पे नहीं लगता है, जॉकी पे लगता है जो उसको चलाता है. तो पैसा ना आपके ऊपर लगा कि आपके अंदर वो एटीट्यूड है कि नहीं है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लगता है पैसा भाई. कि आपके अंदर पैसा लगा तो ये पैसा कमा के दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा. एक तो वो. सेकंड, दूसरी चीज ये है प्रोटोटाइप. आपका प्रोटोटाइप रेडी होना चाहिए. कोई भी ना, बोलते हैं लोग एंजल इन्वेस्टर में बहुत पैसा मिलता है लोगों को, उनके आइडियाज पे मिल जाता है. मेरे को ये सब लपासी लगती है भाई. कोई भी किसी के पेपर में पैसा उठा के नहीं देगा. मैं तो एक गलती कभी जीवन में नहीं करूंगा कि किसी को पैसा उठा के किसी भी पेपर में दे दे कि भाई इसने पेपर में बहुत अच्छा बनाया है, किससे इतना प्रॉफिट होगा, ये आइडिया. ऐसे मैं पैसा नहीं दूंगा. पैसे दूंगा जब उसने इनिशियल कुछ प्रोसेस कर रखा हो, कहीं ना कहीं उसने पैसे कमाए होंगे, करके दिखाया होगा. प्रोटोटाइप पे पैसा मिलता है. मैंने आज 250 फ्रेंचाइजी है. मैं उस पे मैंने इनिशियली दिखाया एक दो फ्रेंचाइज करके. उस टाइम पे मेरे को पैसा दे सकता था कि हाँ भाई इसने 2 फ्रेंचाइजी बेची है, अब दे सकता है. लेकिन जब इनिशियली उसको ख्वाब दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं. Definitely, sir. Prototype and your attitude is very important for to raise fund. Yes. I agree that, having the right attitude to pitch your idea and the perfect prototype that any investor would like to invest in a company. Akshit? Yes, sir. At the end of the day, it's your product. Like you could do fancy marketing and maybe you'll make money for a while. But if you want a long-lasting business, at the end of the day, it's your product that speaks for your company. So, sir, within the last few years, we have seen that the number of demat accounts has almost doubled, and there has been a craze among the youth to invest in assets like stocks or cryptos. So, what are your views on investing in such assets from a very young age? I'm very happy to see and hear this data. A reason is that early investing वाली जो आदत है ना, it's very good. Saving is you're wasting money. As simple as that. Saving in a bank account, investing in a bank account, FD is a bullshit because inflation is 6%. अब 5% 2% के चक्कर में आप अपने 4% बर्बाद कर रहे हो भाई. शुद्ध गणित है. तो वो तो बेवकूफी है, वो तो फ्रॉड है. आप समझ रहे हो, मैं तो एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, इट इज अ फ्रॉड. इट इज दैट स्कीम इज मेकिंग पीपल इडियट, कि आप तो बेवकूफ हो. तो ये जो हमारी टेंडेंसी है ना सेव करने की, अगर वो इन्वेस्टिंग में बदल रही है, इट्स अ वेरी गुड हैबिट. ये तो हैट्स ऑफ है. आई थिंक पीपल आर डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इज एजुकेटिंग यंग पीपल टू इन्वेस्ट मोर where they can get the better return comparatively, at least compared to the inflation. वो अच्छा उनको रिटर्न मिल सकता है. There is other page to that people are investing in the high risk in the high risk portfolio, may it be crypto, may it be NFTs and other stuffs. But at least I'm happy. अगर बोलते हैं लोग बर्बाद, अरे भाई हो जाएंगे बर्बाद. कितना लगाएगा गैंगस्टर पैसा? 10,000 रुपए लगाएगा, 5,000 वो अपने पॉकेट में नहीं लगाएगा ना भाई. वो ड्रग्स करेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा. उससे तो अच्छा है ना कि वो अपना रिस्क लेके वो पैसे उड़ा देगा. Understanding that at least they are trying to explore a market which is going to pay them in a return. So I'm very happy and I hope people मतलब और भी यंग जो जनरेशन हमारी, वो और जल्दी इस चीज को सीखे. अगर मैंने आज से 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, आप लोगों ने आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इन्वेस्ट किया होता, तो आज हम लोग का रिटर्न कितना अच्छा होता. कंपाउंडिंग इफेक्ट वी ऑल नो नाउ. हम लोग को स्कूल में सिर्फ कंपाउंडिंग के फार्मूले पढ़ा पढ़ा के बेवकूफ बना दिया भाई. उसका प्रैक्टिकल हम लोग को सिखा देते ना कि कंपाउंडिंग आपको इस जगह पे यूज करना है. we would have built a big empire as of now. लेकिन हम लोग को नहीं सिखाया. तो टचवुड अगर ये चीज हो रही, बहुत अच्छी है भाई. Crypto, by the way, I'm not supporting crypto. Neither I invest in crypto, so it's a freaking volatile for me. So I neither invest nor I suggest anyone to invest in it. It's your game. So, sir, if I ask you that from what age you have started investing? See, investing. So I've started in not very early. बट जो क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था वो मेरे भैया ही थे, वो हमेशा से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे थे. सो आई थिंक मैं बहुत छोटा था यार. मैं
10th क्लास से स्टार्ट कर दिया हूँ मैंने इन्वेस्टिंग. फ्रॉम दैट एज आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. और फिर 10th क्लास के बाद में उस टाइम पे आई थिंक 12th में रहूंगा जब 2008 का वो आया था. नहीं और पहले आ गया था. 2008 का आपको पता होगा मार्केट गिरा था. उस टाइम पे सब डर रहे थे. तो मैं अपने भैया ना मेरे दिन भर CNBC खोल के बैठे रहते थे. 24 घंटे उनका काम ये था. तो उनका ना बहुत बड़ा लॉस हुआ था. उनका बहुत बड़ा लॉस. उन्होंने अपना फ्लैट भी बेच दिया था. इतना बड़ा लॉस हुआ था उनका. लेकिन उनसे मैंने बहुत सीखा था. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था इतना परेशान होने के बाद में कि ही एंड अप सेलिंग हिज ओन हाउस. आफ्टर दैट ही सजेस्टेड मी कि इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, क्योंकि उनका शेयर मार्केट से ही लॉस हुआ था. तो मैंने बोला यार ये इतना चोट खाया हुआ आदमी मुझे बोल रहा है कि अभी भी इन्वेस्ट करो इन शेयर में, इट मींस देयर इज समथिंग. सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वे बैक इन 10th क्लास. Sir, you have started in very young age. I mean, like 15-14 साल के होते हैं जब कोई 10th में होता है. And as you know that we are finance related society, and we have our project called Samarth, through which we create awareness of investing at grassroots level. So I hope that our project could spread about more word about investing. Wow, amazing! You're doing great. So, sir, have you ever any major setback that you have faced, and what did you learn from that situation? I mean, if you would like to share that with the audience. Setback is a slightly sad part, but I don't know, but I will share it. So recently, 3 months back, I have diagnosed with type 1 diabetes. It's autoimmune disease which can never be cured. It's only one treatment that you have to take the insulin for life. So when I have been diagnosed with it, क्योंकि ये किसी भी इसका कोई रीजन नहीं होता, किसी को भी हो सकती है. There is no reason. So ये किसी को भी हो सकती है, and there is only one treatment that you have to take insulin for life. That's it. इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे. So जब ये मेरे को डायग्नोज हुई तो आई वाज लाइक कि यार मेरी एज ही क्या है, और मेरे को ये करना पड़ेगा. मेरे को 4 बार रात में इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, दिन में 4 बार इंजेक्शन लेने पड़ेंगे. मैं कुछ खा नहीं सकता. बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाती है. बट see, it's only 3 months back, and I'm giving a speech, and then also I have delivered speech in many colleges and many institutions. So I thought I learned one thing, that life is freaking uncertain. So you have to keep smiling. If life cannot be good to you, let's good to be life. Let's throw a smile to it. I recently posted a photo on Instagram. So बहुत सारी चीजें होती है. कई बार आपके माँ बाप परेशान होते हैं. मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इस चीज से. ऑफ कोर्स चीज ही ऐसी है. मेरे फ्रेंड्स बहुत परेशान हो गए थे. सब लोग बहुत परेशान हो गए, क्या हो गया. एंड आई ऑलमोस्ट गॉन टू कोमा 4 times. सो वो चीजें हो गई थी. इट्स बीन बहुत ज्यादा अप एंड डाउन वाली जर्नी हो गई थी. माय कोलेस्ट्रॉल वाज सो मच कि डॉक्टर ने बोला कि छोटा मोटा हार्ट अटैक आ गया होगा आपको. बहुत सारी चीज हो गई थी. लेकिन आफ्टर ऑल यू हैव टू गो थ्रू इट. आपको हर चीज से होना चाहिए. हर चीज मेरे साथ अच्छी चल रही थी. पैसा छाप रहे थे, फेम, क्या नहीं थे, किस चीज की कमी थी. हर चीज थी मेरे पास में. लेकिन सडनली इट केम लाइक ग्राफ ऐसा गया. लेकिन मैंने उस ग्राफ को और नीचे नहीं जाने दिया. मैंने उसको वहीं रोक दिया. मैं बोला उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपन. और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ. अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ. 100 days के बाद मैं अभी ऑफिस गया. लाइफ यार, एंजॉय. Sir, we are sorry to hear about that, and I hope the way you keep smiling towards the life is the only motivation that you give to yourself and your friends and family as well. So, sir, I have one question that from the lens of entrepreneur, what is your vision to see India in next 20 years? What I'm seeing right now in India is already, going ahead than other countries and other developed nations, because we are making the startup army. Recently our government also started supporting startups. अभी आपने देखा होगा नेशनल स्टार्टअप डे भी हमने बनाया. तो I mean, India in the next 20 to 25 years, it will surpass more than 2/3. At least I'm not saying, I'm not giving the big data, लेकिन मेरे प्रेडिक्शन है 2/3 से भी ज्यादा यार. बहुत ज्यादा कंट्रीज को इंडिया सरपास कर जाएगा when it comes to the entrepreneurship or startup. Our economy is still going very good, and it will grow very good because the you people, our people, मतलब young crowd is already working very hard, educated, seeing
seeing entrepreneurships, have seen started seeing the startup from the different lenses. So touch wood to it, and thanks to our parents also कि जो लोग आजकल स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लग गए हैं और अपने बच्चों को स्टार्टअप के लिए परस्यू करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करने के लिए बोल रहे हैं. सो इट्स वेरी मतलब शाइनिंग फ्यूचर इंडिया का तो 20 साल में. Yes, sir, definitely. New ventures are something that generate employment, and a lot of experts do say the same thing that at the end of the day, employment generation is what will uplift a country's situation. So, inspired by your story and similar other stories, over the last few years, we have seen that even starting your own ventures has become sort of a craze, especially among the youth. We see startups popping up every day from all over the country, and it's a really good thing. I mean, I'm personally very happy to see that. But a lot of experts also say this that this has created a bubble because there are too many starters in a very short duration, and they're very overvalued. And there are chances that in the next few years, this bubble might ever burst, and a lot of businesses might shut down. So, how do you suggest a venture or a new venture protects itself if this bubble ever bursts? नहीं, बबल तो उनके लिए बस होगा दोज हु आर ओवर वैल्यूड. देखो, आप अपना टैग दिखा के, आप विजन दिखा के पैसा तो उठा लोगे, लेकिन जब आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे तो आपको डूबना ही है एट लास्ट. सो यू हैव टू फोकस ऑन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी. आप जाके टाइगर ग्लोबल से, सिक्वायर से फंडिंग उठा लोगे और फिर आप चला नहीं पा रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहे हो, वो एग्जिट मारेगा भाई आज नहीं तो कल. और जहां उसने एग्जिट मारी ना, लोग वैसे गिरेंगे ना. मैं बता रहा हूँ, इट इज गोइंग टू हैपन. देयर इज नो डाउट इन इट दैट मार्केट में लोग बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट द वैल्यूएशन गेम. क्या करता है इन्वेस्टर, मैं आपको शुद्ध बात बताता हूँ. आपके में पैसा लगाया, वैल्यूएशन बढ़ी, क्योंकि वो आया आपकी कंपनी में, आपकी वैल्यूएशन बढ़नी है क्योंकि बड़ा प्लेयर है मार्केट में. उसने अपना शेयर बेचा, प्रॉफिट कमाया, निकला, 1-2% छोड़ दिया पैसे के लिए. सो इट्स ऑल अबाउट द वैल्यूएशन गेम. वैल्यूएशन बढ़ाया, वैल्यूएशन किस चीज की है भाई? वो खोखला है. आप समझो तो सही. मैंने एक कंपनी बनाई, एक शेल कंपनी बना ली. मैंने सिक्वायर से बोला भाई पैसे लगा. सिक्वायर नहीं बोलो, किसी भी XYZ किसी भी कंपनी ने मेरे ऊपर पैसे लगाए. उसने पैसे लगाए मेरे ऊपर. मेरी कंपनी के वैल्यूएशन, जो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी मार्केट रेपो की वजह से मेरी कंपनी की वैल्यूएशन यूं बढ़ी. तो उसने 10% खरीदे, दूसरों ने फिर उसी से सिक्वायर बेचना स्टार्ट कर दिया. सिक्वायर नहीं, कोई भी XYZ कंपनी बेचना स्टार्ट कर दिया अपनी ओवर वैल्यूड पावर से, ओवर वैल्यूड शेयर को. तो उसका प्रॉफिट हो गया, इसका भी प्रॉफिट हो गया. इसने भी बचे हुए शेयर बेच दिए, उसने भी अपने बचे हुए शेयर बेच दिए. जिनके पास पड़े हुए शेयर, जो HNIs हैं, जो भी हैं, तो वो तो बेचारा फंस गया. ये तो प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है, कब तक पैसे फंड करेगा उसको, ये बता. तो ये पंगा हो जाता है उन लोगों के साथ में. और इसीलिए भाई हम लोग बूटस्ट्रैप कंपनी है. हमारे साथ बबल ओवर फटेगा नहीं, हम लोग रहेंगे मार्केट में. डोंट वरी अबाउट इट. और हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे वैल्यूएशन हुआ है, वो रियल में भी अच्छा काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जोमैटो इज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट इट विल वर्स्ट, उनके शेयर प्राइस भी डाउन जा रहे हैं. सी, इट्स अ कंपनी जो रियलिस्टिक है, जिसका फ्यूचर में नीड है, जिसकी डिमांड सेंट्रल चीज है, वो चलेगी. हवा नहीं मारते. Yes, sir. At the end of the day, this is something that we learned in the share market anyway. That if you want to invest in a company, see the product and the company, not just the hype and directly invest in it. So, sir, we know that you have invested in other ventures like Tech Master Gogo and First Foundation. So, what are your plans for them, and do you plan to invest in any other company? Currently, we are very much focused on the what are the companies we have, and yes, I'm looking for the companies. If any of you guys are planning to have any startup, or do you really have any startup which is tilted toward tech, I am very much ready to invest the few lakhs and crore rupees, which whatever I can, I will. So, sir, I guess we should take a few questions from the audience now. Sure. So, let's give them a minute to ask their questions. So, sir, I have received the first question from the audience that how Anubhav Dubey himself defined in 3 words. I'm sorry. Can you please repeat? Sure, sir. Sir, one of the audience is asking that how Anubhav Dubey defined himself in 3 words.
Anubhav, how can I define myself in 3 words? Because I know myself very much, so it's a big paragraph, I would say. Uh, but I will say I'm yes, dedicated, uh, super entertaining. I entertain a lot. Um, and ambitious, I would say, because it's a startup wala speech, so I would have to use the three words. नहीं तो कहीं और platform use करता तो I would have changed the 3 words. Sure, sir. I mean, being ambitious is the only, attitude that have, like, you have achieved the height of this startup this far. So, Akshit, could you take the next question from the audience? Yeah, sure. So, and this is a good one. So, sir, how do you feel about Shark Tank India? Um, when it's a good platform. At least it is educating uh, Indian homes that startups do exist, and many of the startups in India have potential. It is teaching the world. It is showing. It is a showcase for the world that India has the caliber to jump and make it as a trillion economy. So I think it's good. And second thing, मतलब ठीक है, मिक्सचर है, कई बार थोड़ा सा बिग बॉस वाला टाइप का भी साउंड करता है, बट इट्स फाइन. आई मीन इट्स फन. मतलब आपको थोड़ा सा तड़का तो लगाना ही पड़ेगा यार, अगर आपको इंडिया में चलना है तो. अगर आप थोड़ा सा सास बहू वाला नहीं दिखाओगे तो चलेगा कैसे यार मार्केट में. सो आपको बेचना भी तो है. सो ठीक है, मतलब मैं तो ठीक है, मैं तो कभी कभार देख लेता हूँ. Sir, actually, that's great to hear. Sir, one of our audience is asking that bootstrapping is very underrated while building any startup. So, like, can you highlight the importance of bootstrapping, because you have built your startup as well on the basis of bootstrapping, if I'm not wrong. See, if somebody is अगर कोई, मैं आपको बताता हूँ भाई, धंधे में ना सिंपल सा फंडा समझा करो. बूट स्ट्रैपिंग में ना लोग क्या करते हैं, अगर आपको फंडिंग मिली ना तो यू हैव बीन ट्रस्टेड बाय बंच ऑफ इन्वेस्टर, वन इन्वेस्टर, टू इन्वेस्टर, वीसी, द बंच ऑफ इन्वेस्टर. इफ यू आर बूटस्ट्रैपिंग, यू आर ट्रस्टेड बाय योर कस्टमर, यू आर जनरेटिंग डायरेक्टली प्रॉफिट. अगर आप मार्केट में 6 साल टिक गए हो ना, मतलब आपके अंदर कैलिबर है, आपको कोई हिला नहीं सकता. 10 इन्वेस्टर चले भी जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पैसा देने वाला आपका कस्टमर है. तो बूट स्ट्रैपिंग को कभी अंडररेटेड किया ही नहीं जा सकता. वो लोग जो लोग फंडिंग, ठीक है, फंडिंग मतलब फंडिंग में अच्छी बात है, कई बहुत स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी धंधा किया हुआ है फंडिंग का, तो उनको जानकारी रहती है कि ये आदमी कैसा काम करेगा, ये स्टार्टअप कैसा काम करेगा, तब उनके ऊपर फंडिंग लगाते हैं. वो अच्छा है, वो उनके पास पीआर रहता है, सो दे डू पीआर. बट देयर इज नथिंग लाइक बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैपिंग बहुत बल्लम चीज होती है भाई. ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस जगह पे हूँ, बिकॉज अब ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है, क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है यार. आप 6 महीने आप नहीं जले हो, कैश बर्न आपका नहीं हुआ, यू सर्वाइव्ड इन द मार्केट, यू आर ग्रोइंग, यू आर स्टेबल, इट मींस बूटस्ट्रैप में दम है. Yes, sir, definitely. Bootstrapping is a very trustworthy strategy. And if we see more ventures adopting that, we might see a few big companies in the next few years. So, sir, this is another question from the audience, is that how do young entrepreneurs convince their parents who are against them from, undertaking such a risky business of starting their own startup? डोंट कन्विंस देम. आप जरूरी थोड़ी कन्विंस कर पाओ यार. अब मम्मी पापा लोग एक दूसरे जमाने के हैं, आप समझ रहे हो. देयर इज अ जनरेशन गैप बिटवीन आवर पेरेंट्स and us, so you're not necessarily can convince them. I cannot convince. I have मेरे पास तो भाई हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने पापा को जाकर कन्विंस करके मैं चाय बेचने वाला हूँ. इतने जूते मारते ना मेरे को वो. सो सी, आप मैंने आपको क्या बोला, इन्वेस्टर को कैसे आप कन्विंस करोगे? बाय शो केसिंग देम अ प्रोटोटाइप. शो योर पेरेंट्स अ प्रोटोटाइप, शो देम दैट यू हैव कैलिबर. मैंने तो कितना करके दिखाया. मेरे पापा को यकीन नहीं था कि मेरा लड़का कुछ कर सकता है भाई. उनको ये था कि ये ना, ये बर्बाद हो गया, ये इसको पढ़ा लिखा के हमने इसको कोचिंग कराई, इसको सीए फेल हुआ, ये कैट फेल हुआ, इसने पैसे वहां के यूपीएससी कोचिंग में बर्बाद किए, ये कुछ नहीं कर सकता. सो आफ्टर द एन नंबर ऑफ फेलियर्स ना, मैं अपने पापा को कन्विंस नहीं कर सकता था. व्हाट आई डिड, आई हैव प्रेजेंटेड अ प्रोटोटाइप. इट वाज एक्सीडेंटल
presentation. Still, it was a presentation to my father that I have achieved something. I have did something with my own. So यार मुझे लगता है कि आप तो उनको ये स्टोरीज दिखा सकते हो कई यंगस्टर्स की जिन्होंने ये किया है, और कुछ करके दिखा सकते हो। और हर बार आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है अपने घर वालों से। हर चीज की आप परमिशन नहीं लेते ना। आप कभी बंक करते हो तो आप परमिशन नहीं लेते हो। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हो तो घर पे बता के थोड़ी बनाते हो। सो अगर आप मतलब मुझे लगता है कि कई चीज लाइफ में खुद भी डिसीजन लेने नहीं चाहिए जो अच्छे होते हैं आपके लिए। डेफिनेटली सर, आई मीन हर एक अपने पेरेंट्स को अपने चाइल्ड के ऊपर उसके जो सपने हैं उनके ऊपर बिलीव तो दिखाना ही पड़ता है। एंड सर, you and your company as well have been featured in Super 25 Startup of Indore, like recently 2 दिन पहले ही हुआ है। तो like what do you feel about that, sir? Amazing. I mean, it's my Karm Bhumi. I started working there. I completed my graduation, and from ninth I have been there in Dubai, in Indore. So, standing between 25 or 24 other entrepreneurs was amazing feeling because most of them were our seniors, जिन्होंने हमको बहुत सिखाया, who nurtured the Indore infrastructure for the entrepreneurship. So it was amazing feeling to stand between them. Though I was the youngest, I think we were the youngest among them. लेकिन फिर भी बहुत वो लगता है कि यार इतने बड़े बड़े लोग 20-20 हजार करोड़ की कंपनी वालों के साथ में यूनिकॉर्न बेबी कॉर्न कंपनीज के साथ में हम खड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार। अमेजिंग फीलिंग है। सिर्फ उस चीज के लिए मैं इंदौर गया था घर से, यार चलो ये चीज है, जाते हैं वहां पे। I mean, that is great to hear. I mean, the energy is radiating here also, and I can see the spark among the audience that they are commenting that soon they are going to, start their own venture like yours, and they are going to give your example to their parents. Like, see, the Anubhav Dubey sir has built their company like this. So, sir, thank you so much for taking out your time and, having and giving us chance to host you for today's interview. Before we end today's interview, do you like to have a few words for the audience? Yeah, go ahead. But I have another speech in SRCC, so you have 5 to 10 minutes if you can. Go ahead. I mean, sir, I'm asking if you could share your, address the audience for 2 minutes. I would love to. So there's only one phrase which I used to say. You might have heard in different platforms. Again, I'm going to say the same thing. All of those who are listening and watching me right now, भाई यही उम्र है झंडे गाड़ने की, आग लगाने की। यही टाइम है, यही सही टाइम है, लगा दो। यू हैव द रिस्क एपेटाइट। आपके अंदर ना इतनी क्षमता इस टाइम पे, एनर्जी आपके पास में, आग होती है इस टाइम पे, तो इस उम्र में आग है। यूज दैट फायर इनसाइड यू। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास रिस्क एपेटाइट है, लगाओ पैसे जहां लगाना है यार। कितना डूबेगा आपका पैसा, कितना टाइम बर्बाद जाएगा, इट्स बेस्ट टाइम। आप अभी फेल हो गए ना, तो आपके पास में वापस से फेल होने का बहुत टाइम है, बिलीव मी। डरना मत कि फेल होगा। फेल होगा तो आप सीखोगे। मैं फेल हो गया यार, सीए में फेल हो गया, कैट में फेल हो गया। IIT से 3 साल से बच्चे रिक्रूट कर रहे हैं हम। सीए की 2 टीमें हैं CACS की। आपको सिर्फ आप ट्विटर में जाके देखिए कितने IAS IPS फॉलो करते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अभी जाओ बाहर, काम करो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बाहर जाओ, झोला उठा के बाहर जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भाई। ऑल द बेस्ट एंड लव यू फॉर हैविंग मी। Thank you so much, sir. Now, Vansh will take over the vote of thanks. Thank you so much, Anubhav Dubey, sir, for this inspiring interview session and blessing our event with your presence. It was really great of you to come on board and share your experience with us. I'm very sure the audience, as well as us, got to learn a lot about the mind which goes behind a successful startup and the startup culture in India. I hope you all enjoyed the session as well. That brings us to the end of day 1 of Finomena. We'd like to take a moment to express our sincere thanks for the audience for their dedicated enthusiasm. Hope to see you all tomorrow in this very engaging format of discussion. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye, sir. Thanks for your time. Welcome, welcome.